All right, let's talk about the invisible force that, well, runs everything. I mean, from the steam rising from your morning coffee to the very screen you're looking at right now, it all comes down to energy and heat. Today, we're diving into what heat actually is and the huge energy choices that are shaping our world. Let's get into it. You know how this goes. You pour a perfect hot cup of coffee, you get busy with something, and when you finally remember it, it's lukewarm. Or you grab an ice-cold soda from the fridge and before you know it, it's room temperature. What is actually going on there? It's not magic, it's just physics doing its thing. So the secret ingredient here is heat. But what even is that? Well, it's not really a thing that an object has. It's energy on the move. That's the key. Heat is simply the flow of energy, and it only flows one way, from hot to cold, always. It keeps going until everything's the same temperature. That's it. That's why your coffee gets cold and your ice melts. Okay, so most of us learned this basic rule in school, right? You heat something up, the little molecules inside it start dancing around like crazy, and the whole thing gets bigger. It expands. Simple. But is that rule really set in stone? Are there any exceptions? We'll meet the ultimate rule breaker, water. Get this. As water cools down, it gets denser and shrinks, just like you'd expect. But then, right at 4 degrees Celsius, something completely bizarre happens. It hits reverse. As it gets even colder and starts to freeze, it actually expands and becomes less dense. This incredible quirk of physics is the whole reason ice floats. It's why lakes freeze from the top down, creating an insulated layer that protects all the life underneath. Just a little cosmic exception that, makes life on Earth possible. Now, that same energy that makes ice behave so weirdly is the very thing we've figured out how to harness to power, well, our entire civilization. But where do we get all this energy from? When you really boil it down, it comes from two very, very different places. On one side, you've got renewable energy. Think of things like the sun, the wind, the water. They're basically an infinite resource. We're not going to run out of sunshine anytime soon. Then, on the other side, you have non-renewables. This is stuff like coal and oil. They're finite, they took millions of years to form, and once we use them up, they're gone. So, to really get a feel for this, let's take a quick tour and look at a star player from each team. First up for Team Renewable, let's talk about the big one, the ultimate power source for our entire solar system, solar power. So how do we capture it? Well, it's thanks to something called the photovoltaic effect, which sounds complicated, but it's actually super elegant. Solar panels are made of these special materials, and when sunlight hits them, that energy is just enough to knock some electrons loose. And a flow of electrons? That's an electric current. It's that simple. You're turning sunlight directly into electricity. Now, the upsides here are pretty obvious, right? It's totally clean, the fuel source is endless and free, and once the panels are up, they just work. But, and it's a big but, the sun goes down every night, and some days are cloudy. Plus, getting all those panels installed in the first place can cost a lot of money up front. Okay, let's switch gears and look at the undisputed champion of the non-renewable world, fossil fuels. Why have they powered our world for so long? Because they are incredibly energy-packed, and you can use them whenever you want, day or night, rain or shine. What's wild is that these fuels are basically just ancient stored sunlight. For hundreds of millions of years, plants and animals died, got buried, and were crushed under immense heat and pressure. All that energy got locked away. So when we burn fossil fuels, we're literally releasing the energy of dinosaurs to power our cars. And here's the thing, not all fossil fuels are created equal, not by a long shot. Just take coal, for example. You've got stuff like lignite, which is pretty low in carbon, and then you have anthracite, which is almost pure carbon. It burns way hotter and cleaner. So even within one category, there's a huge difference in quality. So we have these different ways to get our energy, but this isn't just a technical discussion. The choices we make have massive global consequences. And that brings us to, well, one of the biggest conversations happening on the planet right now. First things first, we need to understand the greenhouse effect. And you know what? It's not a bad thing. In fact, we couldn't live without it. It's just a natural process where our atmosphere acts like a blanket, trapping some of the sun's heat to keep the planet cozy and warm. Without it, Earth would be a giant ice ball. The problem is, we've been making that blanket thicker, a lot thicker. When we burn fossil fuels, we release a ton of extra greenhouse gases, especially CO2. So that thicker blanket starts trapping more and more heat, throwing the whole system out of balance. And when that happens, the planet's average temperature starts to climb. It's a pretty direct cause and effect.
So all of this, it leads us to a really, really big question. Given everything we know, where do we go from here? Let's talk about this number for a second. 210. According to some of the estimates from our sources, if we keep using petroleum at the rate we are now, the known deposits might only last about 210 more years. Now, that might sound like a long time, but in the grand story of human history, it is barely a blink. So we're at a crossroads. On one path, we've got the clean but sometimes unreliable power of renewables. On the other, the powerful but finite and polluting energy from fossil fuels. The future isn't just going to happen to us. The path we take is a choice we make every day with our science, our technology, and our priorities. The only question left is, which one will we make? चलिए आज समझते हैं ऊर्जा को, वो ताकत जो हमारी पूरी दुनिया चलाती है। आग की मामूली सी गर्माहट से लेकर हमारे शहरों को रोशन करने वाले बड़े बड़े पावर ग्रिड तक, सब कुछ एनर्जी ही तो है। तो सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, सर्दियां हैं, आग जल रही है और पास बैठकर वो राहत भरी गर्माहट महसूस हो रही है। ये हम सबका एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ना? पर कभी सोचा है कि इस गर्माहट के पीछे का साइंस क्या है? और ये सवाल सिर्फ आग तक ही सीमित नहीं है। यही प्रिंसिपल तब भी काम करता है जब हाथ में कोई ठंडा ड्रिंक पकड़ते ही हथेली ठंडी हो जाती है। तो आखिर हो क्या रहा है? वो कौन सा फिजिक्स का रूल है जो इन दोनों को जोड़ता है? इसका जवाब है एनर्जी का फ्लो। ऊष्मा, जो एनर्जी का ही एक रूप है, वो हमेशा एक गर्म चीज से एक ठंडी चीज की तरफ बहती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें दिखती नहीं पर बहुत पावरफुल है और हमारे चारों ओर लगातार हो रही है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। हम अक्सर हीट और टेम्परेचर को एक ही चीज़ मान लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहा है, हीट किसी चीज़ के अंदर मौजूद सभी पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी है, मतलब एनर्जी की पूरी मात्रा। वहीं दूसरी तरफ टेम्परेचर उन पार्टिकल्स की एवरेज एनर्जी है कि वो औसतन कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो हीट है कुल ऊर्जा और टेम्परेचर बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी महसूस हो रही है। आमतौर पर जब चीज़ें ठंडी होती हैं तो वो ज़्यादा डेंस हो जाती हैं, मतलब सघन हो जाती हैं और डूब जाती हैं। लेकिन प्रकृति में एक चीज़ ऐसी है जो इस नियम का एक कमाल का एक्सेप्शन है, और वो है पानी। ये एक बड़ा सवाल है ना? अगर ठंडा पानी भारी होकर नीचे बैठता तो झीलें तो नीचे से ऊपर की तरफ जम जाती और मछलियां और दूसरे पानी के जीव सर्दियों में जिंदा ही नहीं बच पाते। तो फिर होता क्या है? वो बचते कैसे हैं? तो इसका राज छिपा है इस ग्राफ में। जरा इस कर्व पर नजर डालिए। जहां ज्यादातर चीजें ठंडा होने पर सिकुड़ती जाती हैं, पानी का बर्ताव बिल्कुल अलग है। इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होती है। और यही है सबसे क्रूशियल पॉइंट। जब पानी 4 डिग्री से और ठंडा होकर 0 डिग्री पर बर्फ बनता है तो ये फैलता है और कम डेंस हो जाता है। और बस यही वजह है कि बर्फ पानी पर तैरती है। ये तो नेचर का एक कमाल का एक ट्रिक है। तो होता ये है कि सर्दियों में झील की सतह पर बर्फ की एक परत जम जाती है। ये परत एक कंबल की तरह काम करती है जो नीचे के पानी को और ज्यादा ठंडा होने से बचाती है, और नीचे सबसे डेंस पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर बना रहता है, जिससे पानी के जीव आराम से अपनी सर्दियां बिताते हैं। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे फिजिक्स के नियम जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं। तो जिस तरह पानी से जुड़े साइंस के ये नियम एक झील में जिंदगी को बचाते हैं, वैसे ही एनर्जी के सिद्धांत हमारी पूरी सिविलाइजेशन को चलाते हैं। चलिए अब जरा बड़े स्केल पर देखते हैं कि हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एनर्जी का वही बेसिक प्रिंसिपल जो आग से हमारे हाथों तक गर्मी लाता है, वही हमारे घरों को, हमारी फैक्ट्रियों को, बेसिकली पूरे समाज को पावर दे रहा है। हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से एनर्जी के कंट्रोल्ड यूज पर ही टिकी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आएगी कहाँ से? और यहाँ हमारे सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। हमें चुनना होता है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ से लें, उन सोर्सेस से जो एक दिन खत्म हो जाएंगे या उन सोर्सेस से जो हमेशा मौजूद रहेंगे। पहला रास्ता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का। सोचिए ऐसे रिसोर्स जिन्हें बनने में लाखों साल लगें, जैसे कोयला और तेल। प्रॉब्लम क्या है कि ये लिमिटेड हैं, एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हमेशा के लिए खत्म। और दूसरा रास्ता है रिन्यूएबल सोर्सेस का। ये कुदरत के वो तोहफे हैं जो हमें लगातार मिलते रहते हैं। सूरज की कभी ना खत्म होने वाली ताकत, चलती हुई हवा की स्पीड और बहते हुए पानी का जोर, ये सोर्स कभी खत्म नहीं होते।
तो चलिए अब जरा देखते हैं कि हम कुदरत की इस बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर एनर्जी की। इन सोलर पैनल्स को देखिए, ये करते क्या है, ये बड़ा कमाल का है। ये सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल देते हैं। सूरज की इतनी विशाल एनर्जी का फायदा उठाने का ये एक डायरेक्ट तरीका है। नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। हवा बनती है सूरज से, क्योंकि वो धरती को एक समान गर्म नहीं करता। ये जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां यहाँ दिख रही हैं, ये हवा की काइनेटिक एनर्जी को पकड़कर उसे बिजली में बदल देती हैं। और जब बहुत सारी चक्कियां एक साथ लगती हैं तो उसे विंड फार्म कहते हैं। और आखिर में बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी यानी पानी की ताकत की। यहाँ दिख रहा है कि कैसे पानी को रोकने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। फिर जब इस पानी को छोड़ा जाता है तो इसकी ताकत से टर्बाइन्स घूमती हैं और बिजली बनती है। ये एनर्जी हासिल करने का एक बहुत पुराना और पावरफुल तरीका है। तो देखिए, एक आग की मामूली सी गर्मी से लेकर बड़े बड़े पावर ग्रिड्स तक एनर्जी का फ्लो हमारे वजूद के सेंटर में है। हमने देखा कि कैसे कुदरत के नियम जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं और कैसे हम उन्हीं नियमों का इस्तेमाल अपनी सिविलाइजेशन को पावर देने के लिए करते हैं। असली सवाल अब यह है कि भविष्य के लिए हम कौन से एनर्जी सोर्सेस पर भरोसा करेंगे। आज हम जो भी चुनेंगे वही तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियों को कैसी दुनिया मिलेगी।